Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are discussing negative interactions. We have discussed predation and parasitism. Today, we are going to discuss one more important ecological interaction, that is competition. Competition is such a relationship in which one population adversely affects the other population's struggle for food, of a living space, or a common resource. Usually, competition is for resources that are in limited supply, or for energy and matter that are in usable forms. स्पेशीज के दरमियान कंपटीशन होता है यूजुअली उन चीज़ों के लिए जो सप्लाई में कम होते हैं, जिनकी क्वांटिटी कम होती है, और इस रिलेशनशिप में, इस कंपटीशन में एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन को एडवर्सली अफेक्ट करती है. You know, plants compete for growing space to develop a root and shoot system. ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो पौधे होते हैं, फॉर एग्जांपल, ये compete करते हैं दूसरी स्पेशीज के साथ अपना रूट सिस्टम बनाने के लिए, अपना शूट सिस्टम बनाने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सनलाइट को प्रोसेस कर सकें, अच्छी तरह से वाटर एब्जॉर्प्शन हो सके इनके लिए, और ये अच्छी तरह से सॉइल से न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सकें. इसलिए इनका रूट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इनका शूट सिस्टम अच्छा होना चाहिए. तो शूट सिस्टम को डेवलप करने के लिए, रूट सिस्टम को डेवलप करने के लिए, यू नो, that plants compete with other species. Similarly, ये जानवर जो होते हैं, एनिमल्स, दे ऑल्सो कम्पीट फॉर लिविंग. जिंदा रहने के लिए कंपेटिशन है, नेस्टिंग के लिए कंपेटिशन है, फीडिंग साइट्स या ब्रीडिंग साइट्स के लिए भी कंपेटिशन होता है. जैसा कि हमने इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस के इंट्रोडक्शन में पढ़ा, वो इंटरैक्शंस जो होती हैं between the members of the same species, they are known as intraspecific interactions. यहाँ भी ऐसा competition, that is among the individuals of the same species. Competition among members of the same species is known as intraspecific competition, whereas the competition between the members of different species is known as interspecific competition. So far as the intraspecific competition is concerned, अगर एक ही species के individuals, अगर एक ही species के individuals strive करें for same resource, resource एक ही है, एक ही species के individuals भी हैं, अब उसमें क्या होता है, everyone gets a bit of it or a part of it, but so little that it is very difficult to survive. ऐसे कंपटीशन को हम स्क्रैम्बल कंपटीशन बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है फाइनाइट रिसोर्स. इसको सिंपली बोलते हैं फाइनाइट रिसोर्स that is shared equally among us the competitors, so that quantity of food per individual declines with increasing population density. मैं आपको फिर से समझाऊंगा. अगर रिसोर्स कम है, रिसोर्स इज इन लिमिटेड सप्लाई, और एक ही पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स इस रिसोर्स के पीछे पड़े हैं, और इस रिसोर्स में से इन सब को थोड़ा थोड़ा मिलता है, फॉर एग्जाम्पल फूड सप्लाई की बात करेंगे, लेकिन इतना थोड़ा मिलता है कि इनके जिंदा रहने के लिए, सबके लिए काफ़ी नहीं है. ऐसे कंपटीशन को बोलते हैं स्क्रैम्बल कंपटीशन. द कंपटीशन दैट इज inadequate
inadequate for the needs of all, but which is partitioned equally among the contestants. ये इन सब में बढ़ जाता है इस तरीके से that no competitor obtains the amount it needs, and ultimately it is said that in such a competition all would die in extreme cases. अगर रिसोर्स बहुत कम सप्लाई में है और इंडिविजुअल्स स्पेशीज के इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा है, इनके दरमियान स्क्रैम्बल कंपटीशन है, तो there is a probability that the competitors would die. As against scramble competition, there is one more competition that is known as contest competition. It refers to a situation where available resources such as food or mates are utilized only by one or a few. ऐसा कंपटीशन जिसमें ये जो रिसोर्स है जैसे फूड है या मेड्स हैं रिप्रोडक्शन के लिए, दे आर यूटिलाइज्ड बाय वन, इनको इस्तेमाल करता है जो कंपेटिटर ज़्यादा मजबूत होगा, ताकतवर होगा, चाहे ये एक हूँ या एक से ज़्यादा हूँ, लेकिन इसमें अनलाइक स्क्रैम्बल कंपटीशन ये सब के सब में रिसोर्स नहीं बढ़ता है, बल्कि इस रिसोर्स को यूटिलाइज करने वाले एक और अ फ्यू इंडिविजुअल्स होते हैं. विद द रिजल्ट क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अदर एनिमल्स. इसमें एक या कुछ कंपेटिटर्स जीत जाते हैं. इट इज अपोजिट ऑफ स्क्रैम्बल कंपटीशन. यूजुअली देखा गया है कि अगर किसी एरिया में किसी इकोसिस्टम में इंडिविजुअल्स की तादाद कम है, if there are a few individuals, obvious that there would be less competition. For example, in Arctic region में जहाँ severe climatic conditions हैं, we see there are very few plants and there is no competition between these plants. Competition shapes a species population and biological community. In intraspecific competition, members of same species compete directly with each other for resources. अब इस कंपटीशन को कम करने के भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं, बहुत सारे जराया हैं, बहुत सारे तरीके हैं. मिसाल के तौर पर इन स्पेशीज के दरमियान ये कंपटीशन कम कैसे होता है. लुक हियर, आपने देखा होगा या हमने अब सुना होगा that plants practice dispersal. ये जो प्लांट्स हैं इनमें डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है, चाहे विंड से, चाहे वाटर से, एनिमल्स या इंसेक्ट से. अब उससे क्या होता है, ये जो सीड्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं to less crowded conditions away from the parent plants. This is a very nice way to reduce the competition. इस डिस्पर्सल से इन प्लांट्स में कंपटीशन कम हो जाता है. There is one more way. आपने सुना होगा कुत्ता अपनी गली में शेर होता है. हम इसके बहुत सारे माना निकालते हैं, लेकिन दिस इज ऑल कंपटीशन. ये जो डॉग्स हैं या बियर्स हैं या सॉन्ग बर्ड्स हैं या अनग्लेड्स हैं, जो हूफुड मैमल्स जिनकी हमने पिछले लेक्चर में बात की, ग्रेजिंग एनिमल्स, और इवन फिश, जब इनके एरिया में
कोई दूसरा जानवर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल किसी गली में कुत्ते होते हैं जो वहां बहुत टाइम से रह रहे होते हैं, तो अचानक कोई और कुत्ता वहां चला जाता है किसी और एरिया से, आपने देखा होगा वो उसके साथ बहुत लड़ाई करते हैं। और ये बिहेवियर किस लिए है? दिस इज टू रिड्यूस द कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। इस बिहेवियर को बोलते हैं टेरिटोरियलिटी। एंड सच एनिमल्स दे एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियलिटी or territorial behavior. Such species are known as territorial species. They force their young ones, अपने जो बच्चे इनके होते हैं जो बड़े हो जाते हैं फिर, और trespassing adults, या इनके एरिया में जो कोई अडल्ट आ जाता है या इनके जो यंग वंस होते हैं, they force them out of their vicinity, अपने एरिया से उनको बाहर निकालते हैं. This is the way to reduce competition. Here is one more way to reduce this competition, that is known as resource partitioning. देखा गया है बहुत सारे इंडिविजुअल्स में there is resource partitioning between generations. वो क्या मतलब होता है? The adults and the juveniles, इनके बड़े और इनके छोटे, they occupy different ecological areas, rather different spaces in the same ecological area, जिसको हम नीच बोलते हैं, ecological niche. एक ही एरिया में रहते हैं लेकिन अलग अलग जगहों पे रहते हैं. मिसाल के तौर पर there is a butterfly known as monarch butterfly that feeds on milkweed. एक प्लांट है. इस मोनार्क बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर्स होते हैं, जो इसके छोटे कीड़े होते हैं, दे मंच ऑन लीव्स, वो इस मिल्कवीड के लीव्स खाते हैं. लेकिन जो बटरफ्लाई मेटामॉर्फोज्ड होती है, जो बड़ी बटरफ्लाई होती है, जो इनका एडल्ट होता है, दैट लैप्स द नेक्टर, वो इस प्लांट का रस पीती है. मतलब ये, आई रिपीट, इस मोनार्क बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स जो होते हैं, जो इसके छोटे कीड़े होते हैं, वो लीव्स खाते हैं. और जो एडल्ट बटरफ्लाई, मेटामॉर्फोज्ड बटरफ्लाई होती है, बड़ी तितली जो होती है, ये इस मिल्कवीड का नेक्टर पीती है. हालांकि है तो एक ही स्पेशीज, वो भी यही स्पेशी है, ये भी यही स्पेशी है. वो एडल्ट है, ये जुवेनाइल है. जुवेनाइल की अलग इकोलॉजिकल नीश है, एडल्ट की अलग इकोलॉजिकल नीश है. दिस इज अ वे टू रिड्यूस द कंपटीशन. इससे भी इनके दरमियान कंपटीशन कम हो जाता है. या मिसाल के तौर पर एक और मिसाल मैं आपको दे दूंगा. क्रैब्स की हमने लास्ट लेक्चर में बात की, हमने क्रैब्स देखे, वहां हर्मिट क्रैब फॉर एग्जांपल, पर्ल क्रैब हमने देखा गया है. ये जो क्रैब्स हैं और ऑर्थ्रोपोड्स जो हैं, इनके जो लार्वे होते हैं, दे फ्लोट, वो पानी पर तैरते हैं. एंड दे डू नॉट compete with the adult crabs that are bottom dwelling. इनके बड़े जो होते हैं, एडल्ट्स होते हैं इन क्रैब्स के, वो यूजुअली बॉटम डिवेलिंग है, वो यूजुअली पानी के नीचे रहते हैं. लेकिन जो लार्वे होते हैं, दे फ्लोट ऑन द वाटर, वो पानी पर तैरते हैं, ऊपर वाले लेयर्स में रहते हैं. एंड दिस इज द वे टू रिड्यूस द कंपटीशन. There is one more important principle related with competition, that is known as competitive exclusion principle. There was an ecologist, George Gas. उसने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में प्रोटोजुअन पैरामीशियम की 2 स्पीशीज ले ली.
Gas took two species of paramecium. One was Paramecium aurelia, Aurelia. Another was Paramecium caudatum, Caudatum. Gas cultured two species of paramecium, Paramecium aurelia and Paramecium caudatum. इसने इनको इकट्ठे कल्चर किया, इसने इनको लिमिटेड फूड सप्लाई दी और देखा कि पैरामीशियम ऑरेलिया जो है, ओनली पैरामीशियम ऑरेलिया कुड सर्वाइव. इट आउट कम्पीटेड पैरामीशियम कॉडेटम. इन दो के दरमियान ऐसा कंपटीशन हुआ कि पैरामीशियम ऑरेलिया ने ही ज्यादा नशोनुमा हासिल की. इसने पैरामीशियम कॉडेटम को आउट कम्पीट किया. दैट मीन्स कि अगर रिसोर्स लिमिटेड सप्लाई में है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन or intraspecific competition, what happens? One species gets eliminated. एक species eliminate हो जाती है ultimately, and the elimination of one species by another as a result of interspecific competition. This is known as competitive exclusion principle. इसी को हम बोलेंगे competitive exclusion. Sometimes this is also known as Gauss's principle. When the resources are in limited supply, the competitor that is more powerful outcompetes, rather eliminates the competitor that is less powerful.